They promise if the pizza is not delivered in 45 minutes, then it will be entirely free of cost. So companies, they do work to make the things faster. And actually, that is one of the reasons why the rapid change in our world is happening, because everybody is working to make the things faster. Even IT companies, they are working to make the things faster, better, cheaper, easier every single day. Lot of AI product development companies are working to develop products which are making the customer's life and solving the customer's problem in a faster, better, cheaper, easier manner. And that is the reason we see the massive amount of change. And the amount of change, I mean, the rate of change is the fastest in the entire world. Okay. So did you heard what I said about the faster thing, right? Please say yes in the chat box. Or should I explain again? Okay, great. Fine. And actually the question which I asked is this, because everybody is working to make the things faster and faster and faster. And that is the reason a lot of change we are seeing. Initially, as we have discussed yesterday, initially we were working on mainframe computers. Then personal computers came, and now AI is coming like anything. There are right now 15,000 AI tools already has been developed for a variety of purposes. So you can see the massive rate of change. Okay, so Ashutosh, can you unmute and ask me what you would like to me to explain? Yes, Ashutosh, would you like to unmute and tell me? Yeah, no problem. We'll work. The next point is better, because you know that everybody is working to make the things better. I mean, earlier there were trains, and right now the era of coming is of bullet trains, and even some other faster ways of traveling are also coming. Some other new ways. So everybody is working to make the things better, and everybody is also working to make the things cheaper. For example, Walmart, they are in market because they want to make the things cheaper. They make the things at a very cheaper rate available to the people. Even DMart in India, their motto is make the groceries available cheaper. And Big Basket, that is an example of easier, because I order my groceries from Big Basket, they just deliver at home. And if something is not that good quality, I just have to complain to the customer service team and they refund the entire money, no arguments. So they make my life very easy. And that's the reason I've given them a lot of business, continuous business, recurring business. So these are the four areas which the entire world is working. Every single company is working on these four aspects: faster, better, cheaper, easier. So is this clear? Do you agree with this, guys? If it is clear, just write yes in the chat box. Okay, great. Fantastic. Brilliant. Yeah, and actually, somebody has asked me the question yesterday about what we should reply to the interviewer if the interviewer is asking that the technology got obsolete. So can that person unmute again? I think his initial was MM. He asked the question: if the technology become obsolete, then what we should do? Because the technology is changing very fast. So can that person unmute? I will reply that question. Okay, no, it appears that person is not there. Anyways, so my answer is, see,
I mean, the technology can be changing, but the problem, IT software task is to solve the problem of the customers. Customer means most of them are businesses only. So, I mean, technology may change, but the problem remains the same. So even if the technology is changing, the problem is not changing, and we are solving. Technology is just a means to solve the problem. So do you agree that this is a good answer? If the interviewer asks to you, can someone unmute and tell whether it's a good answer? Okay, so Akash is telling fine, right? Fine. So actually, are you finding this concept enlightening? That every company is working for this, and that is the reason we are seeing massive amount of change. And as I already said, the amount of change is the fastest in entire human history, and it will become faster and faster. We are going to say we are going to see accelerated rate of change. Okay, now moving on to next slide. Yeah, actually, yesterday we discussed these three things: domain knowledge, soft skills, business literacy. But I would like to highlight one important point here. See, the rate of change in domain knowledge is like a jaguar or cheetah or leopard. I mean, the rate of change is very fast. And the reason is because every company is working to make the things. Please write 4 reasons in the chat box. What are the 4 reasons which is bringing the massive amount of change? I've shown it to you in the earlier slide. Please write those 4 reasons in the chat box, please. Technology. No, actually, in the previous slide, we have discussed those 4 reasons. Yes. Mohammed has said it rightly. Shivangi has also said it right. Pravir has also said it right. Faster, better, cheaper, easier. That's brilliant. Fantastic. Ashutosh also mentioned fine. Okay. Akash also said correctly. Okay. So that is the change that is coming in the domain knowledge. For example, computer science only example we have taken. AI is coming like anything. And computer science people, they are facing the rapid change in the technology. But similar, it is not that this change is coming in software only. It is coming in cars also. It is coming in trains as well. Bullet trains are coming like anything. And then cars are also becoming faster and faster. They are becoming safer and safer. Companies are introducing safer seat belt was introduced long back. Now airbags, they are also the norms. Some other also safety practices they are building. That even if the car is traveling at 200 kilometer and the accident happens, then also nothing should happen to the passengers. So every branch of engineering, every field is seeing that. And as you know that, I mean, around 20 years back, there were concept of home delivery was not there. But right now, the delivery itself is becoming faster. Swiggy has come, even Blinkit has come right now. So they're making the delivery faster, better, cheaper, easier. It may not be cheaper in every case, but it is becoming certainly faster and better. So you can see the amount of change that is happening. Even with social media also, the rate which we can communicate is very fast. Earlier we used to write letters, so the rate of communication was very slow. Then email came. Now it's an era of social media. Instantly we can communicate. Using WhatsApp, I can communicate to you in a second, within a second. Within a second, I can communicate with hundreds of people. And if I'm having Telegram, then maybe more. And using Facebook, thousands of people. Right? So the rate of change is very fast in domain knowledge, and we have to be aware. If we are business related people, then we should be knowing it that in domain knowledge the rate of change is very fast, and that we should be knowing the underlying reason as well. Now coming to soft skills, the rate of change is like a tortoise. It's a very uh, slow change. For example, the communication fundamentals, they will not change. The way we should communicate, the way we should listen, the word we should use. So those are it's a very slowly changing thing, and it's a fortunate thing. Otherwise, if
Domain knowledge is also changing fast, and if soft skills also would have been changing fast, then our life would have been really miserable. So it's a fortunate thing that the rate of change in soft skills is very slow. And the most fortunate thing is that the business literacy concepts, they are like lighthouse. They are eternal. They are timeless. They are universal. They will not change with time. So it's a very fortunate thing. And if you are knowing the business literacy concept, right, the one which we have discussed earlier, faster, better, cheaper, easier. And some more concepts we will be discussing in the coming slides, in the coming sessions as well. So if you are knowing those fundamentals, those will always be helpful to you. Those will always be your friends. So do you agree with this, that business literacy is your best friend because it is not changing and it is going to always help you? So if you agree with this, then write yes in the chat box. Okay, brilliant, fantastic. So people actually see, the more you will participate, the more benefit you will get. Because see, if you are involving your multiple senses, the more senses will be involved in learning, the more active you are, the more benefit you will get. And I will also get more energy from you. And the more energy I will get, I will deliver with more energy as well. And learning requires energy from both the side, from the audience side as well as from the speaker side. So if both are very energetic, they are communicating in very high energy, then the learning will be immense. Now moving to the next slide. Okay, so this was the question he asked. Two reasons why company hire. I mean, every single company in this world, they hire only for two reasons. Whether it can be American company, Japanese company, Indian company, or African company. Whether the company belongs to pharmaceutical or mechanical engineering or IT or civil engineering or a restaurant business. Every single company hire only for two reasons. And if you want to get hired, then you must be knowing these two reasons. So now please inform your views why the companies hire. Please inform the two reasons. Okay. Riddhi is telling for fresh and innovative minds. Akash is telling problem solving. Okay. Sumit is close. Profit. To make more money. Yes. Mr. Patel is also very close. Actually, I'm asking for two reasons, not one. So tell me two reasons. Now, Moria is telling work distribution. Okay. So, Tanisha, actually, people, you're telling that companies hire to get the manpower, but you know that in Australia, there are many supermarkets which are totally manless, which are totally automated. Customer will come, they will pick up the products, and when they check out, so the billing will be done automatically. There are totally manless supermarkets are also there in this world, and soon it will come in India also. Even there are driverless cars as well. Okay, maximizing profit through better productivity and innovation in new domains like marketing. Okay. So yeah, actually it is close to help company grow. Okay, profit growth. Fine. So I will tell you my reasons, and I'm sure you will agree with this. The first and foremost is, as some of you have answered, to increase their revenue and profitability. Of course, the companies are in business because they want to make money. So of course, they will need people, those who will help them in increasing their revenue and profitability. And the second reason is to increase their customer satisfaction. Because see, every company is working to serve a customer, right? Is there any company which does not have any customer? Tell me a company which does not have any customer. Or if you feel there is no company which does not serve any customer, then you write no in the chat box. Okay, great.
Yes. So Akash is rightly told none. Yes. Mohammed is also telling none. Sumit is also saying no. Okay, great, fantastic. So see, actually, I will tell any role which can be associated with this. For example, if somebody is in sales, company is hiring for a sales role, then of course that person has to close the deals. That person has to bring more revenue. If the person is closing the deal, then or they are selling the products or services, then they are, of course, they are bringing more revenue, more profit. So for salesperson job, it is very clear that they are hired to increase the revenue and profitability, and also they should be working on improving the customer satisfaction. For example, if some salesperson is doing wrong selling, they're selling the wrong expectation, and they're misinforming about the product, and if they're selling it, then the customer satisfaction will be low. So what will happen in the long term, that the company's business will get suffer. So have you ever experienced that somebody has sold you something which wrong expectation, and then later on you will angry, and then you never bought from that company? Has it happened to you? If yes, then please write yes in the chat box. Okay, so it has not happened with anybody. Okay, that's, I mean, you never had this experience. See, and actually, I would like to give one more example. I mean, a job of a maid also can impact the revenue and profitability. How it can impact? I would like to listen from you. For example, there is a maid whose job is to clean the office and serve the tea to the employees and customers. So, how even a maid can impact revenue and profitability? So, please answer your answers in the chat box, please. Yeah, please answer. I'm waiting for your reply. Okay. Hospitality to the clients. So yes, what Abhya is telling is that she can improve the customer satisfaction, right, Abhya? And Naga is telling because she is saving time of such people who are working to solve problem of larger groups. Okay, fine. Yeah, see, actually, as you will agree that what maid is doing, if the maid will clean the office properly, then what will happen? The employees' productivity will improve because they are working in a very cleaner environment. And if the maid is behavior is also good, she's preparing good tea and serving it in a very proper manner, in a very caring manner, then the employee's productivity will be higher. Customer will also be feel respected, and the customer satisfaction will also improve. So even a maid can impact the revenue and profitability of a company, and also the customer satisfaction as well. Of course, their contribution should be measured in the terms of the salary which they are getting. I mean, in terms to the cost to the company, that is called also called as CTC. So, do you guys know what is called CTC? Because it is a very important term. Cost to the company. Okay, and what Akash is telling, and she is contributing to the economy by spending the money in the market. Yeah, she is contributing the economy, but the question was how even a maid can impact. So I actually I can challenge you that there is no role in any company which cannot impact customer satisfaction and profitability. For example, if somebody is working in Bajaj Auto, and if they are doing the quality audit of the bikes, the Bajaj Auto, they make bikes. So now, if the person is not doing the job properly, then the faulty bikes will come in the market, and it will decrease the customer satisfaction, and it will decrease the brand value of Bajaj Auto. People will be having less trust. So in future, the sales will be less. So even a quality department person is also impacting these two parameters. So I can challenge you humbly that
there is no role which cannot impact these two parameters, and company indirectly hire for these two reasons. And I will also tell you that there are many interviewers, those who will take the interview, but they will not know this with this much simplicity and clarity. Today, actually, I'm feeling the energy is very less. What is happening with NIT people? So, you're very energetic people, right? And also, yeah, Akash telling she is contributing to the economy by spending the money in the market. Yeah, okay, he's got the point. Okay, great. So now if we have this information, which only 1 in 1 lakh right now is having this much this information with this much simplicity and clarity, because I can tell you, you ask the people in the market, you ask the seniors, you ask the even big people, senior managers in the corporates, you ask these two reasons, they will not be able to tell with this much simplicity and clarity. And that is what business world literacy is all about. To tell you the timeless and fundamental concepts in a very simple and clear manner, and in a very challenging manner to you also. What business world literacy tells us, these are the concepts, you cannot challenge them. It is true. It is true like law of gravity. So if we are getting this much certain knowledge, and in with this simplicity and clarity, so it is useful or not. If you feel it is useful, then write yes in the chat box. And guys, actually, please be more participative, because if you want me to be more energetic, then I also need energy from you guys. Okay, great. Sumit, Akash, Swati, they are also agreeing. Mohammed is also agreeing. Fantastic. Riddhi is also agreeing. Yes, great, great, fantastic. So actually, we can use this information. See, do you know that every company will ask the question, might be in the HR round. I mean, might in some technical people can also ask this question, but certainly this question is asked in the HR round, why we should hire you. So now, how you will use this information to provide the best answer to this question, why we should hire you. It's a very frequently asked question. It is the commonly asked questions by the interviewers, and we must be prepared. And if we can answer this question properly, then our chances of getting selected will be at least 20% higher. So now you tell me how you will use the information which you have provided to answer this question. And actually, I will encourage people to unmute also and talk to me as well. So that will bring more energy. See, I've explained in the earlier slide only the two parameters and how you can use this information in answering this important, frequently asked, and commonly asked questions by the interviewers. Okay, fine. So nobody is writing anything. So let me provide the answer to you. See, the answer to this is, you should hire me because I will contribute to the revenue improvement, and I will do my best to improve the customer satisfaction, and I will work for achieving the professional goals of my boss. So these three reasons you will give. The person will ask you why we should hire you. Then your answer should be, you should hire me because I will help in increasing the revenue and profitability of your company as compared to cost to the company, of course. And also I will help and do my best to improve the customer satisfaction of the company. Because if you are helping the company is improving the customer satisfaction, then the company's business will grow in the future. Yes or no? Yes or no, guys? Please write it yes in the chat box. Okay, great. Deepa, Mohammed, Sumit.
Sapna. Yeah, actually, you see, interestingly, this Pareto principle is applied everywhere. Here also, 142 people are present, but only around 20% are replying. So this Pareto principle is applicable everywhere. Okay. And of course, there will be counter questions on this. That person will be asking how you can improve us in increasing the revenue. Okay. And that answer will also be provided to you as part of business literacy. When we go in more detail, that answer will also be provided. But even if you're telling this much answer, and if the person is asking you how, you can tell this, sir, I don't know at this point of time, but I know that this is my role and this is what I should strive every single day when I'm in your company. I will help your company in maximizing the revenue and the customer satisfaction, and I will also work for the organization goals. And of course, those will be the professional goals of my boss also. So later on, I will tell you how to counter the cross question also. But even if you tell this, and if you tell this that I will find out how at this point of time, I don't know, if, then also you will be ahead of lot many candidates. So do you agree with this, guys? And will you use the information? So if you will use this information in your interviews, write yes in the chat box. Okay, great, brilliant. And actually, let me tell you guys, I mean, this kind of clarity and simplicity is not even offered in IITs also. Because this is business for literacy, first time introduced in NIT Bhopal. And so even IITians will not be able to answer questions with this much simplicity, with this much clarity, and with this much impact. So just utilize this knowledge, and then you can beat the people with the of the premier institutes also in the job market, and then you will be able to stand out, which is the topic of our discussion, right? Okay, now coming to the next question, what is one thing which every professional should do to the best possible every single day, irrespective? I mean, yeah, what is that one thing which every professional should do best possible every single day, irrespective of the, actually there is some typing mistake here, irrespective of the industry. Yeah, now it is correct. Okay, so now tell me. Okay, achieve daily goals. Okay, that is good answer. But daily goals for what? I mean, daily goals can be anything, but daily goals should also be directed properly. Yes, Ayushi. Yes, would you like to say anything? Okay, upscaling. Yes, upskilling is a good answer. Keep learning, that's also a good answer. But there is one more answer. Yes, Lapkush is perfectly right. It's value creation. So see, when we are in the business world, when we are in the corporate world, so irrespective of our role, industry, or company, or era, it can be pre-AI era, post-AI, pre-COVID, post-COVID. It does not matter. The timeless answer is value creation. So every single day you have to be working on creating the maximum value. Okay, and actually this answer you can also give when the
interviewer will ask you why we should hire you. Then you can also tell, because I know it very clearly that every single day I have to create the maximum value possible. So now, Lavkush, you have said it properly. So can you please unmute and tell me what is value creation? To come to customer satisfaction, company should value the product of the company to maximize the value of company product. Okay, how we will maximize the value of the company product? And first of all, actually, I would like to ask you, from where did you learn this, that value creation is the answer? सर आपने जो पीपीटी भेजी थी उसमें क्वेश्चन थे. ओके, हाँ, जो मैंने गूगल फॉर्म भेजा था, राइट? यस सर. Okay, okay, great. So great, you have answered greatly. Okay, we will come in later. What is value creation and all? This great thing. But people will actually be interactive, because you are feeling that my energy is also becoming low, because I need that interaction, man. Okay, so yeah, Lakush, thanks for your answer. So we'll see what is value creation. And one answer can be the product should make the life of the customer. I mean, the product should help the customer to make the facilities available to him in a faster, better, cheaper, easier manner. So that is also value creation, right, Lakush? Yes sir. Okay, great. And which you are studying right now? Mechanical third year. Mechanical third year, sixth semester. Fantastic. Okay, so I mean, soon you will be facing campus interview. Yes. So whatever we are learning, just utilize it, and I'm sure it will be helping to you in the campus interviews, and you will be able to clear it in a faster and easier manner. So look at this. I mean, even my job is to make the things faster, better, cheaper, and easier for you guys. So everybody is working on that only. Okay. So now coming to the next point. Yes, the next question is, what is that one thing that every legal company does without exception? So now tell me that one common thing which every legal company does without an exception. So what is that one thing? Yeah, please write in the chat box. Give it a thought and please write. Okay. So now let us see what the people are replying. Analyzing their markets. Are they selling, hiring? Okay. Yeah, Aditya, actually, but I mean, all companies are not always hiring. For example, I'm also having small businesses. I'm having 4 small businesses. So always I am not in hiring mode. But I do one thing. My company, every company does one thing, which is every single day. Okay, then Akash is telling training their employee. Okay, not every company does it. Protect confidentiality. Some companies it does not protect confidentiality also. Okay, marketing their product. Some companies they are not doing marketing because they are getting business from word of mouth. Their products and services are so good that without even marketing they get the clients. To enhance product quality. Okay, that's good answer. But not every company is enhancing the product. For example, Subway sandwiches. I was eating the same sandwich 20 years back also,
And these days also I eat the same sandwich, same product quality, no improvement. Enhancing their product quality, investment, increase revenue, bylaws, maximize their profit, analyzing and improve customer needs and satisfaction. Okay. Pravir is close somewhat. Exchange value. Okay, that is good answer, Aditya. Stand up meeting. No, I mean every company does not do stand up meetings. Follow rules and regulations. This is also not done by everybody. Making strategy for maximum profit. Some companies they don't maximize. I mean, they are happy with whatever level they are because they don't want to grow. They don't want much tensions, especially some small companies. The owner they are. I mean, they are becoming old, so they don't want to maximize any further. So they are happy with this. So not this is also not done. Okay. So anyway, the answer is solving customer problem because any company is in business to solve the customer's problem. For example, if you go to restaurant, right, then the restaurant is solving the problem of hunger, or if the I mean the if the customer has a problem that they need taste, so now that company is solving that. We go to movies because of releasing the stress or to get entertainment. So movies are solving this problem. So every single company is solving I mean, they are in the business because they are solving the customer's problem. All IT companies, all mechanical companies, for example, the car companies, they are providing cars, the vehicles, because they want to solve the customer's problem of transportation. Because if they will travel by their own, then it will be very hard. It will be time consuming. It will take a lot of time, lot of effort, and customers will not like it. So they are making the customer's life easy. They are solving the customer problem, but providing them good cars. Okay. So do you agree with this? Solving the customer problem is the answer to this. Do you agree with this, guys? Please write a yes in the chat box. Okay. Okay. Great, great, great. So now are you guys feeling more enlightened about our business world? Because I am telling you the timeless and universal concepts in a very simple and clear-cut manner. And I am telling that these concepts nobody can challenge. Even I am professors also cannot challenge because it's a truth. They cannot challenge it. Even Mr. Narayan Murthy cannot challenge this. He has to agree. Okay, great. Abhya is telling getting a direction, sir. Okay, great, Abhya. I like your learning attitude. Brilliant. Okay, so now coming to the next point is, now the question is, what is value creation? It's a very important question. And I can tell you that if you ask any CEO also, they will not be able to tell with this much clarity. So, I mean, in corporate, the language will be used. Tell me what value you have added, what value you are creating. And we will create value for our customer. But when we will ask what is value, then most of the people, they will not be able to answer what is value. Though the world is working, entire business world is working because of value creation only, because customers need value, because people need value. You need education. You want to get a job, so you also want value. And the entire business world is working because of that only, right? Now, so can somebody unmute and tell which is the product they have bought? Any volunteer, please? Yes. Yes, please. Unmute and tell which is the product you have bought recently.
Uh, Good afternoon, sir. Sir, I Yes. wanted to answer your question of value creation, Mm-hmm. which you have asked recently. Sir, Yeah. value creation refers to the process of generating benefits, financially, operational, or strategic. Like, Mm-hmm. अगर किसी कंपनी का मतलब मेन गोल यही है इंक्रीजिंग रेवेन्यू, तो उस कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट होगा बाय इंक्रीजिंग रेवेन्यू, ब्रिंगिंग न्यू कस्टमर्स, इन्हांसिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, या फिर ओके। वैल्यू क्रिएशन ये भी हो सकता है कि रिड्यूस कॉस्ट रिड्यूस करना, एफिशिएंसी इंक्रीज करना, राइट। कस्टमर कस्टमर एक्सपीरियंसेस को एनहांस करना, और ग्रोथ और इनोवेशन में भी अपना इनपुट देना अच्छे से। हम्म। हाँ, तो देखो आयुष, ये आपके मतलब जवाब काफी अच्छा है। आई एम इम्प्रेस विथ योर आंसर। लेकिन इसका और भी क्लियर कट और भी सिंपल तरीके से बताया जा सकता है इसका, जो कि एक लेमन भी समझ सकता है। अभी जैसे मैं आपकी बात को किसी कुक को या ड्राइवर को बताऊं तो वो नहीं समझ पाएगा। तो इसको और भी हम क्लियर कट तरीके से बता सकते हैं। और आपने मतलब थोड़ा जेनरिक बोला है काफी, मतलब आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए इसमें, लेकिन इसको और भी शॉर्टर तरीके से, और भी क्लियर तरीके से, और भी सिंप्लीफाइड तरीके से हम बता सकते हैं। बट ग्रेट अटेम्प्ट फ्रॉम यू। आई एम टोटली सर जैसे इम्प्रेस्ड विद योर आंसर। गूगल हाँ, है, बताइए। फॉर एग्जांपल हम्म। गूगल है, वो यस। वैल्यू क्रिएट करता है बाय प्रोवाइडिंग फ्री सर्च सर्विसेज, पर वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है थ्रू एड्स। तो राइट। उसके लिए वो वैल्यू क्रिएशन हो गया, क्योंकि वो अपने कस्टमर्स का भी ख्याल रख रहा है फ्री सर्विसेज देके, और अपना भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है थ्रू एड्स। यस, एग्जैक्टली। उसने मतलब कस्टमर की लाइफ को चीपर बना दिया, मतलब उसने ये सर्च को चीपर बना दिया, राइट, क्योंकि फ्री है। उसने फास्टर भी बना दिया, उसने बेटर भी बना दिया, उसने इजियर भी बना दिया, उसने ये सभी काम कर दिए, राइट। जैसे जो हमारे ये डिलीवरी वाले ऐप्स होते हैं, जोमेटो, स्विगी, तो ये लोग कस्टमर्स की लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं बाय कनेक्टिंग यूजर्स टू द रेस्टोरेंट बाय थ्रू क्विक डिलीवरी। बट इसमें वो जो अपना जो प्रॉफिट कर रहे हैं, इसमें उनका भी प्रॉफिट हो रहा है, और उन्होंने कस्टमर्स की लाइफ में भी वैल्यू क्रिएट किया है। तो ओके ये ओके। कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, आई गेस। यस यस, यू आर टोटली राइट। हाँ, मतलब आप जो भी बोल रही हो आप सही बोल रही हो, बट इट आई विल फर्दर सिंप्लीफाई इट। ठीक है, आई एम मतलब थैंक यू अंडरस्टैंडिंग सर। सही है। आप कौन सी ब्रांच में, कौन सी ईयर में आप? सर केमिकल थर्ड ईयर। थर्ड ईयर, ग्रेट ग्रेट। यस। Okay, so I think you are partially ready for to face the campus interviews, and I will make you more ready. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Okay, fine. और कोई बोलना चाहता है? हाँ, तो एक्चुअली जो आयुषी ने बहुत सारे तरीके बताए वैल्यू क्रिएट करने के, और इवन इससे भी ज्यादा तरीके करीब 50-60 तरीके हैं वैल्यू क्रिएट करने के। और वैल्यू को एकदम सिंपल तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, और वैल्यू क्रिएशन का इवन फॉर्मूला भी बताया जा सकता है, व्हाट इज वैल्यू क्रिएशन। ओके। Now let us see what Akash is telling. Akash is telling is value creation is to adding value to the customer. हाँ, ठीक है आकाश, वो ठीक है। बट व्हाट इज एक्चुअली व्हाट इज वैल्यू देन? वैल्यू है क्या? कैन यू डिफाइन इट प्लीज? और देखो फ्रेंड्स, आप लोग गलत भी बोलोगे तो भी चलेगा, देयर इज नो इशू, क्योंकि आई विल करेक्ट इट। So at this point of time in the session, feel free to make mistakes. There is no issue, but be interactive, be participative. Okay? हाँ, तो आकाश बताइए, what is value? Karthik is telling trust is value. Okay, there is Hello, one sir. I candidate. think by using Yeah. Hello, sir. I think by using Yes. minimum resources, if we are solving the problem of the customer, or we are Hmm. providing the satisfactory service to the customer, and it is adding value to the customer, then it can be a value creation. Yes, you're right. हाँ, जिस चीज को भी आप फास्टर, बेटर, चीपर, इजियर बना सकते हैं, तो आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो उस तरीके से। Yes, ठीक है, sir. तो आप किसी भी चीज को आप फास्टर बना दो। इनफैक्ट देखो, आपको कोई भी बिजनेस चालू करना है, आपको जैसे आकाश, आपने कभी सोचा कि कोई बिजनेस चालू करना है आपको? अभी नहीं तो माइट बी 10 years बाद। हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस? Yes, sir. ओके, इवन आयुष ने भी सोचा होगा, जिस तरीके से वो बात कर रही थी। आयुष, हैव यू आल्सो थॉट अबाउट इट कि फ्यूचर में आप कभी बिजनेस करोगे? ओके, फाइन। हाँ, तो एक्चुअली देखिए कि यदि आपको कोई भी बिजनेस चालू करना है, तो यू हैव टू मेक द थिंग्स और प्रोडक्ट और सर्विस एटलीस्ट 10% फास्टर, और एटलीस्ट 10% बेटर,
और एटलीस्ट 10% ईजियर और एटलीस्ट 10% चीपर। तो आपने इनमें चार में से कोई भी एक चीज को आपने 10% यदि इंप्रूव कर दिया तो देन यू कैन स्टार्ट द बिजनेस। और यदि आपने दो चीजों को कर दिया तो यू विल हैव अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। और यदि आपने इनमें से तीन को कर दिया देन यू विल हैव अ ब्लॉकबस्टर बिजनेस। और यदि आपने चार को कर दिया तो देन यू विल हैव अ लीजेंडरी बिजनेस। जैसे कि चैट जीपीटी ने किया, उसने हर चीज को फास्टर कर दिया, इजियर कर दिया, चीपर कर दिया, इजियर कर दिया। जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल बताया था, मैंने अपनी बुक का ट्रांसलेशन जो मैं विदाउट एआई के थ्रू करता तो मुझे कम से कम 3-4 महीने लग जाते या 6 महीने भी लग सकते थे, लेकिन मैं एआई के साथ काम करके मैंने 1 वीक में कर दिया। तो उसने मेरा काम फास्टर, बेटर, चीपर, इजियर कर दिया। सो इट्स अ लीजेंडरी थिंग व्हिच दे हैव डन। सो नाउ डू यू एग्री विद दिस गाइस कि आपको अपना बिजनेस चालू करना है तो एटलीस्ट वन पैरामीटर में यू हैव टू मेक इट एटलीस्ट 10% इंप्रूवमेंट एज कम्पेयर टू द कस्टमर्स। अच्छा, तो आकाश अभी आप बताना चाहिए कि आपने लेटेस्ट कौन सी चीज परचेस की, कोई भी आप एक चीज बताओ। I have purchased a shirt from the Ajio. ओके, तो आपने वो शर्ट वहां से ही क्यों ली और वो ब्रांड की क्यों ली? Because sir, they are providing something which are not providing. I think most of the players, like Hmm. they are refunding money very quickly, and Hmm. they are giving a lot of options to buy the shirts. Hmm. That's why I chose their services. ओके, तो उन्होंने देखो आपको आपके काम को उन्होंने बेटर बना दिया, इजियर बना दिया, आप जैसा बोल रहे हो, राइट? इट इज Yes, इजियर sir. एंड बेटर। हाँ, तो देखो उन्होंने भी डिफरेंशिएट किया ना अपने आप को, राइट? अच्छा, दूसरी चीज बताओ, Yes, और sir. कौन सी चीज आपने परचेस की? तो इसमें मैं देखो आपको जस्टिफाई किया ना मैंने कि आपने बेटर और इजियर देख के आपने किया ये प्रोडक्ट परचेज, राइट? ठीक है, Yes, sir. और बताओ, और क्या बाय किया आपने कभी भी ये रिसेंटली? So recently I brought a monitor of Acer brand. सॉरी, कौन सा ब्रांड? एसर Acer. ब्रांड। अच्छा, तो वो क्यों लिया आपने? आपका तो रीजन सर क्या था वो डिसाइड करने का? हाँ, वो जो भी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे थे वो सारे ब्रांड्स में सबसे चीप प्राइस पे प्रोवाइड कर रहे थे। यस, तो द चीपर इज द रीजन, राइट? यस सर, यस सर। ओके, चलो एक आध और एग्जांपल बताओ, और क्या बाय किया आपने? ये चीपर वाज द रीजन। तो देखो इनमें से कोई एक रीजन आएगा, और यदि एसर चीपर प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करेगा या बाकी तीन पैरामीटर भी एडजस्ट नहीं करेगा तो क्या वो बिजनेस में रहेगा आकाश? नो सर, आई डोंट थिंक। हाँ, नहीं रहेगा सर्टेनली। इवन देखो मेरे बाजू में भी किराना शॉप है, मेरे घर के पास में है, तो वो हर चीज नहीं बेचता है, लेकिन क्या है कि मैं वहां से मुझे कभी कभी इसलिए परचेज करना पड़ता है बिकॉज इट्स इजियर फॉर मी। वो कॉस्टली भी बेचता है, इवन बिग बास्केट भी उसे सस्ता दे देता है। लेकिन जैसे मुझे अभी एक ही आइटम चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट चाहिए, ठीक है, तो अब मैं बिग बास्केट का वेट नहीं कर सकता, सो इट्स इजियर फॉर मी, मैं इसलिए परचेज करता हूँ। तो दैट पर्सन इज इन बिजनेस बिकॉज ही इज मेकिंग द थिंग्स अवेलेबल easier for me and other people in the vicinity। यस ठीक सर। है, तो इसमें राइट, तो अभी ये बात प्रूफ हो चुकी है कि हर बिजनेस इसके कारण ही बिजनेस में रहेगा। और यदि वो इन चारों में से एक भी चीज को यदि सेटिस्फाई नहीं करेगा, चार में से जीरो को सेटिस्फाई करेगा, तो वो बिजनेस से चला जाएगा, वो बिजनेस खत्म हो जाएगा। डू यू एग्री विद दिस आकाश? यस सर, टोटली एग्री। हाँ, ठीक है, तो बिजनेस चालू करने का क्या फंडामेंटल बताया मैंने? 10% रूल क्या सर है बिजनेस चालू करने का? इट कुड बी 10% फास्टर or 10% better or maybe हम्म 10% cheaper and maybe 10% easier. If any ब्रिलियंट, business have फैंटास्टिक। combination of two or more things, that can be more beneficial. यस, ब्रिलियंट। और तीन का कॉम्बिनेशन कर दिया तो तो सर स्काई रॉकेट हो जाएगा। हाँ, ब्लॉकबस्टर बिजनेस बन जाएगा। और चार का कर दिया तो फिर तो वो लीजेंडरी हो जाएगा। जैसे एक यस टाइम सर। पे समीर भाटिया ने, जो हमारे इंडियन ही है, उन्होंने हॉट मिल्क का इन्वेंशन किया। तो उस टाइम पे क्या है कि ये सब लेटर वगैरह से लोग भेज रहे थे, तो उन्होंने हॉट मिल लाया, तो उन्होंने फास्टर, बेटर, चीपर, इजियर सब कर दिया। तो इसलिए उनका नाम बहुत फेमस हो गया, और उन्होंने 400 मिलियन भी कमा लिया, वो भी उस टाइम पे, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट थी उस टाइम पे, राइट? और यस हालांकि सर। वैसे देखिए बाकी चारों को एड्रेस करना बहुत टफ भी होता है, बट हमें अटेम्प्ट करना चाहिए कि मैक्सिमम इन चारों में से हम जितने मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकें और जितना ज्यादा परसेंटेज हम बढ़ा सकें, उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिटेबल बिजनेस रहेगा।
राइट, डू यू एग्री? Yes, sir, definitely. ओके, तो ठीक है, एनलाइटनमेंट हो रहा है अभी आपको बिजनेस वर्ल्ड के बारे में? Yes, sir. हाँ, राइट, ग्रेट, फैंटास्टिक। तो देखो फ्रेंड्स, अभी हम डिफाइन करते हैं कि वैल्यू क्या है और वैल्यू क्रिएशन क्या है। टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन अ वेरी सिंपल मैनर, वेरी इजियर मैनर, जिससे आपका एनलाइटनमेंट हो जाएगा, आपके ज्ञान की चक्षु और ज्यादा खुल जाएगी। ठीक है, तो अभी देखो, मनी फ्लो इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस कैसे हो रहा है इस दुनिया में? एक्चुअली बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, राइट? बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स एवरी सिंगल डे हो रहे हैं। जैसे आकाश ने एसर का लिया, उन्होंने शर्ट ली, और भी काफी सारी चीजें लेते रहते हैं। वैसे हर इंसान लेता रहता है, इवन आकाश भी काफी चीजें परचेस करता है, काफी लोगों को वो पेमेंट करता है। तो इस दुनिया में एक्चुअली बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन एवरी सिंगल डे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 800 करोड़ पीपल है। तो मेजोरिटी ऑफ केसेस में जो मनी का फ्लो रहता है वो ये पैटर्न फॉलो करता है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पैसा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आकाश के पेरेंट्स ने उसको मनी ट्रांसफर किया, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो गया ना। आकाश ने उससे एसर का ले लिया, तो उसने बिजनेस को पैसा दे दिया। अब वो एसर वाले ने अपना रेंट पे कर दिया, तो वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया, राइट? तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में मनी ऐसा फ्लो हो रहा है। डू यू एग्री विद दिस गाइस? हाँ, अभी एक्चुअली नाउ कैन यू प्लीज अनम्यूट एंड थ्रो योर व्यूज ऑन दिस? तो आप लोग देखो, जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे तो उतना ज्यादा मैं आपको और ज्यादा बेनिफिट करा पाऊंगा। बी पार्टिसिपेटिव। जैसे अभी आकाश ने काफी अच्छा पार्टिसिपेशन किया, आयुषी ने भी काफी अच्छा किया, तो नाउ सम अदर पर्सन शुड कम। हाँ, सो लवकिश यू आर टेलिंग, ओके, ओके, नाउ एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ द मनी फ्लो इन ऑल द केसेस। अभी देखिए, ये जो डायग्राम है, आई कैन गारंटी यू कि इसमें दुनिया में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं मनी के, सारे इसके दायरे में आ जाएंगे, इसके स्कोप में आ जाएंगे। जैसे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हमने देखा एग्जांपल, हम लोग जैसे मूवी देखने जाते तो इंडिविजुअल टू बिजनेस हो गया, या मेरा बिजनेस है, मैंने फेसबुक को ऐड के लिए पे किया, या जैसे अभी आयुषी ने बोला कि गूगल को भी लोग पे करते हैं गूगल एडवर्ड्स के लिए, तो मैंने गूगल एडवर्ड को पे किया एज ए बिजनेस, तो वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया। नाउ मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, तो वो बिजनेस टू गवर्नमेंट हो गया। गवर्नमेंट ने मुझे रिफंड किया, तो गवर्नमेंट टू बिजनेस हो गया। अमेरिकन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश की हेल्प की, तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमपी गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, तो वो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गया। तो सारे ट्रांजेक्शन इसी के दायरे में आ रहे हैं। यू एग्री विद दिस? So this is the money, this diagram is depicting the money flow in the billions of transactions which are happening every single day in our business world. So do you guys agree with this? Okay, fine. Okay, so we'll move forward. हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है बट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एनलाइटनिंग डायग्राम। अभी क्या है कि जो बायर, देखिए, बायर सेलर को मनी देता है और जो सेलर है वो वैल्यू देता है। जैसे आकाश ने एशर वाले को पैसा दिया, उसने उसको जो भी कंप्यूटिंग पावर है वो दी, उसने उसने उसको वैल्यू दे दी, राइट? आपने अपने कॉलेज को पे किया, आपका कॉलेज आपको एजुकेशन दे रहा है, तो वो आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो वैल्यू कैन बी चेंजिंग, और वैल्यू क्या है, डिपेंड्स ऑन द किसी के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल देखो, अभी मुझे एयरपोर्ट जाना है और मुझे एकदम फास्ट जाना है एयरपोर्ट, तो यदि मुझे टैक्सी मिल जाए तो मैं उसको डबल भी पे कर दूंगा, राइट? बिकॉज उस टाइम पे मेरे लिए वो वैल्यूबल है। लेकिन यदि मैं अभी आपको सेशन दे रहा हूँ, कोई टैक्सी वाला बोलेगा कि सर आप आइए, मैं आपको फ्री में लेके जाता हूँ, या मैं उल्टा आपको 1000 रुपए भी दे रहा हूँ, आप चलो मेरे साथ एयरपोर्ट, तो क्या मैं जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए, मुझे वो अभी वो वैल्यू नहीं चाहिए, मेरे को उसकी अभी जरूरत ही नहीं है। तो वैल्यू एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द कस्टमर सिचुएशन, कस्टमर का पर्सपेक्टिव रहता है। मतलब इट्स कैन बी पर्सन डिपेंडेंट ऑल्सो। जैसे आई डोंट ईट नॉन वेज, तो मुझे कोई नॉन वेज खिलाएगा तो मैं उसके लिए पैसे नहीं दूंगा, इवन वो मुझे पैसा भी देगा तो भी नहीं खाऊंगा मैं।
बाकी काफी लोग पे करके नॉनवेज खा लेंगे क्योंकि उनके लिए वो वैल्यू है। तो राइट, तो वैल्यू डिपेंड ऑन द सिचुएशन, बेस्ड ऑन द पर्सन, और भी काफी फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है। बट दुनिया के हर ट्रांजेक्शन में ये पैटर्न आप देखोगे, सिंपल पैटर्न, कि बायर पैसा दे रहा है, सेलर वैल्यू दे रहा है। इज दैट हैपनिंग इन द बिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन व्हिच आर हैपनिंग इन आवर एंटायर बिजनेस वर्ल्ड? डू यू एग्री विद दिस गाइस? तो आकाश, इस बारे में आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? Okay, fine. Do people agree with this? ओके okay. हाँ, तो देखिए अभी एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड आने वाली है, क्योंकि do you people all everybody wants to make money, everybody wants to build wealth. If you want to make money and wealth, write W in the chat box. Okay, great. Yeah, a lot of people are writing W. So now I will be telling you the formula, which is the timeless and universal and basic formula to earn money and make wealth. And of course, I am talking about the professional environment, not to do something illegal or unethical. Here we are talking about the professional environment, because then only we are earning the money peacefully as well. And that is wealth creation equal to value creation. मतलब आप जितना ज्यादा वैल्यू क्रिएट करोगे, उतनी ज्यादा वेल्थ आपके पास आएगी। तो जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अमिताभ बच्चन की मूवीज करोड़ों लोग देखते हैं, राइट? नाउ अमिताभ बच्चन यदि किसी एक ऑडियंस के लिए यदि इतनी वैल्यू क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो उसको एंटरटेन कर रहा है, ठीक है, उसका स्ट्रेस रिलीज कर रहा है या एंटरटेन कर रहा है, जो भी है। सपोज इफ ही इज क्रिएटिंग दिस मच वैल्यू फॉर 1%, तो आप करोड़ों लोगों के लिए देखो कितना इमेंस वैल्यू क्रिएशन हो गया अमिताभ बच्चन का, बहुत ही इमेंस हो गया, राइट? तो वो मैसिव वैल्यू क्रिएट कर रहा है, इसलिए उसके पास करोड़ों में पैसा आ रहा है। और यदि अमिताभ बच्चन की मूवी हजारों लोग देखेंगे, तो क्या होगा फिर? उनका वैल्यू क्रिएशन कम हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। तो फिर उनको वो उतनी इमेंस रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा उनको। माइट बी ही माइट बी आउट ऑफ द बिजनेस आल्सो, क्योंकि वो वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही ना। ठीक है, तो वैल्यू क्रिएशन, मैसिव वैल्यू क्रिएशन को कोई और एग्जांपल देना चाहेगा? आप लोग बताइए। वो आप लोग गलत भी बताओगे तो भी चलेगा, बट प्लीज बी पार्टिसिपेटिव। देखो, मैंने अमिताभ बच्चन का बताया कि वो मैसिव वैल्यू क्रिएट करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल विराट कोहली है, उनका मैच भी करोड़ों लोग देखते हैं। तो इसलिए विराट कोहली इतना अमीर है, क्योंकि उन्होंने उतनी वैल्यू क्रिएट करते हैं, राइट? अभी और एग्जांपल बताइए आप। किसी भी वेल्दी पर्सन का आप बता सकते हो कि ये वेल्दी इसलिए है क्योंकि इन्होंने ऐसे वैल्यू क्रिएट किया। ठीक है, somebody can unmute and talk to me. सर मतलब जितनी भी एनर्जी कंपनीज हैं जो मतलब एनर्जी प्रोवाइड करती हैं थ्रू वेरियस कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल सोर्सेस, वो भी मतलब इतना हाई वैल्यू इसलिए करती हैं क्योंकि मतलब वो कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रही हैं पर्टिकुलर कंट्री को, मतलब। राइट, ग्रेट। तो आपकी ब्रांच कौन सी है अभी, कौन सा ईयर है आपका? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3rd ईयर। ओके, ग्रेट ग्रेट, फैंटास्टिक, ग्रेट। ठीक है, हाँ, दैट्स गुड आंसर। तो देखिए, अभी वो जो उन्होंने इलेक्ट्रिकल कंपनीज या एनर्जी कंपनीज का उन्होंने एग्जांपल दिया, तो हाँ, वो करोड़ों लोगों को इलेक्ट्रिकल सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके कारण वो एक मैसिव वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं। इवन इन्फोसिस भी आप देखिए, मतलब उनके बॉस
बड़े बड़े फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स हैं, तो उनको वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि उन बिजनेसेस का काम फास्टर, बेटर, चीपर, इजियर हो सके। तो इन्फोसिस भी यही काम कर रहा है। तो उनके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं, और उन क्लाइंट्स के आप देखो उनके भी कितने सारे कस्टमर्स हैं। जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, जैसे अमेरिका की कोई कंपनी है फॉर्च्यून 500, लेट्स से एग्जांपल ऑफ टेस्ला। टेस्ला भी किसी ना किसी सॉफ्टवेयर बनवाता होगा। इवन ब्रिटिश टेलीकॉम है जैसे यूके की कंपनी, तो उसके भी करोड़ों क्लाइंट्स हैं। टेस्ला के भी लाखों क्लाइंट्स हैं। ऐसे ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके लाखों करोड़ों क्लाइंट्स हैं। तो फिर वो कंपनीज क्या है कि बहुत सारी वैल्यू क्रिएट करती हैं। जैसे जियो का आप देखो, रिलायंस जियो, जियो का काफी सारे लोग उसकी सर्विसेज यूज करते हैं, करोड़ों लोग। तो वो कितनी इमेंस वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, और इसीलिए मुकेश अंबानी के पास इतना सारा पैसा आ रहा है। इवन एयरटेल, एयरटेल भी इमेंस वैल्यू क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो लोगों को कनेक्ट करा के देता है। तो उनका कनेक्शन, उनका कम्युनिकेशन को वो इजियर, फास्टर, बेटर और चीपर सभी कर रहा है, राइट। तो वो इमेंस वैल्यू क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल कोई देना चाहता है जहां पे हम ये सर बोल सके कि हाँ, ये बताइए। लाइक जैसे सर बिल गेट्स की विंडोज है, तो विंडोज सर्विस हाँ, वर्ल्ड वाइड यूज करी जाती है, जिसके थ्रू एग्जैक्टली, कई बिजनेसेस रन किए जाते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस रन कर जाती हैं, मे बी कई गवर्नमेंट्स भी रन करी जाती हैं। तो बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करते हैं, दैट्स व्हाई इनके पास बहुत बड़ी वेल्थ है। ब्रिलियंट एग्जाम्पल, फैंटास्टिक, ब्रिलियंट आकाश, यू गिवन ग्रेट एग्जाम्पल। और कोई एग्जाम्पल देना चाहता है? आपका भी 6 सेमेस्टर है क्या आकाश? यस सर, आई एम इन 6th सेमेस्टर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। ओके, ठीक है। या एनी अदर एग्जाम्पल बाय एनीबॉडी? तो देखो यहाँ पे एक्चुअली मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो भी बंदे लीगल तरीके से वेल्थ कमाते हैं, तो वो वैल्यू क्रिएट करके ही वेल्थ कमाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल लाइक दाऊद इब्राहिम एंड ऑल, जो कि इलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं। वो क्या करते हैं, लोगों को थ्रेट करके एक्सटॉर्शन करते हैं, या किसी को किडनैप करवा दिया, इस टाइप के काम करके वो पैसा कमाते हैं। बट बिकॉज वी आर प्रोफेशनल पीपल, और हमें पीसफुली पैसा कमाना है, हमें एथिकली पैसा कमाना है, हमें लीगली पैसा कमाना है, राइट। वी आर प्रोफेशनल पीपल। तो इसलिए हमें ये सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ज्यादा वेल्थ कमाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। ज्यादा, राइट इन द चैट बॉक्स, क्या करना पड़ेगा हमें ज्यादा। तो जितनी ज्यादा आपको वेल्थ चाहिए उतनी ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगी गाइस, राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द आंसर। यस, उतनी ज्यादा हमें वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो अभी हर किसी को पैसा कमाना है, तो फिर उसका सिंपल तरीका वैल्यू क्रिएट करो। अब वैल्यू क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है? तो देखो ये भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि वैल्यू क्रिएशन का फॉर्मूला दुनिया में आपको कोई भी नहीं बताएगा, जो यहाँ पे हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। यस, माइकल जॉर्डन का भी ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि उनका मैच भी काफी लोग देखते हैं, उन्होंने काफी लोगों को एंटरटेन किया, अपनी टीम को जिताया भी उन्होंने। तो उन्होंने काफी इमेंस वैल्यू क्रिएट की, इसलिए वो लीजेंड है, और काफी उन्होंने काफी दौलत भी कमाई। ओके, तो ठीक है, लेट अस डिफाइन व्हाट इज वैल्यू। तो देखिए वैल्यू क्या होता है, यदि आप किसी का पेन को कम कर दें, सो दैट इज वैल्यू। केवल दो ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा, या तो आपने किसी का पेन कम कर दिया, दैट इज वैल्यू। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, कोई बीमार है, किसी को तकलीफ है, तो उसके पेन को वो कम करते हैं, तो वो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं पेन को कम करके, राइट। मेरा भी एक्चुअली वही काम है कि मैं आपके कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कम से कम पेनफुल बनाना चाहता हूँ, ताकि आप एकदम स्मूथली आपको जॉब मिल जाए, और अच्छी जॉब मिले, मतलब आपको हायर सैलरी पे मिले, और इवन जॉब मिलने के बाद भी आप लोग करियर में बहुत ग्रो करो। दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। द प्रमोशन शुड आल्सो बी पेन इन लेस पेनफुल, क्योंकि यदि आप लोग स्मार्ट वर्क करोगे तो कम एफर्ट में आप लोग प्रमोशन जल्दी से ले लोगे, राइट। तो यदि हम किसी का पेन कम कर रहे हैं तो हम उसके लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, यदि हम किसी को प्लेजर प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी हम उसके लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि रेस्टोरेंट्स का काम है, यदि वो टेस्टी फूड खिला रहे हैं तो उसके लिए वो प्लेजर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। मूवी देख रहे हैं लोग, या क्रिकेट मैच देख रहे हैं, विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप हमें जितवा रहा है, या राहुल हमें ये अभी जो रिसेंट वर्ल्ड कप हुआ उसने फाइनल में जितवाया, तो उनने हमें प्लेजर प्रोवाइड किया, तो वो वैल्यू क्रिएट की उन्होंने। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो राहुल है उसको अभी एडवर्टाइजिंग असाइनमेंट ज्यादा मिलेगी कि नहीं, ये सुनो, पहले से ज्यादा मिलेंगे ना।
Yes, sir. Type in the chat box, yes or no. Yes, हाँ, आकाश is telling yes, वंशिका is also telling yes. Okay, great. हाँ, तो उनको एडवर्टाइजमेंट ज्यादा मिलेगा तो उनको ऑफ कोर्स कमाई भी बढ़ जाएगी ना, तो उन्होंने वैल्यू क्रिएट किया तो वो उससे कमाई बढ़ गई। तो सिंपल तरीका है ना वेल्थ कमाने का, पैसे कमाने का सिंपल तरीका है, वैल्यू क्रिएट करो और पैसा कमाओ, दैट्स इट। पीसफुली पैसा कमाओ, कोई आपको गलत नहीं बोल सकता ना, गलत सही काम कर रहे हो ना, प्रोफेशनली कर रहे हो। देखो पैसा कमाना है तो दूसरे का फायदा करा के कमाओ, जैसे कि आकाश ने जो एसर का लैपटॉप किया, तो एसर कंपनी ने उसको लैपटॉप दिया ना, कोई उसको गन रख के तो पैसा नहीं लिया ना उससे, तो आकाश का उन्होंने फायदा कराया और उससे पैसे ले लिए, तो दैट इज प्रोफेशनल वर्क ना, पीसफुल वो बिजनेस कर रहे हैं। तो हमें जब पैसा कमाना है तो हमेशा दूसरे के सामने वाले का फायदा करा के पैसे लो, देन इट इज इथिकल एंड प्रोफेशनल, और इससे आप पीस ऑफ माइंड से पैसा कमा सकते हो। इवन नारायण मूर्ति देखो, उन्होंने कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए क्योंकि उन्होंने इमेंस वैल्यू क्रिएट कर दी। इतने सारे फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिए उनकी कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाए, तो कितना इमेंस वैल्यू क्रिएट किया, तो इसलिए उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ गए। इवन एलॉन मस्क भी यही कर रहे हैं भी, काफी अच्छी अच्छी कार्स बना रहे हैं, काफी ऑटोमेटेड कार्स बना रहे हैं, ईवीज बना रहे हैं वो, तो इसलिए उनके पास भी बहुत दौलत आ रही है। वॉलमार्ट यही काम कर रहा है, वो लोगों को ग्रोसरी चीपर रेट पर प्रोवाइड कर रहा है, और इतने सारे करोड़ों लोगों को वो यदि चीपर रेट पर प्रोवाइड कर रहे हैं वॉलमार्ट, तो वो काफी करोड़ों लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए वॉलमार्ट के पास काफी पैसा आ रहा है, राइट। तो देखो वैल्यू का सिंपल डेफिनेशन है एडिंग प्लेजर टू समबडीज लाइफ और रिड्यूसिंग पेन फ्रॉम समबडीज लाइफ और बोथ, ये है वैल्यू क्रिएशन। So Ayush, should you agree with this definition? Ayush, are you there? सर यस सर। हाँ, ओके। तो देखो अभी इसको हमने काफी सिंपल बना दिया ना, जो आप बात कर रही थी कि प्रॉफिट हम बढ़ाएंगे या स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करेंगे, और जो भी आपने काफी अच्छे आंसर्स दिए तब, लेकिन फंडामेंटली यही था ना, प्रॉफिट हम बढ़ा रहे हैं तो कंपनी का क्या कर रहे हैं, कंपनी को, जिस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है उसका ओनर का प्लेजर बढ़ रहा है, उसके इन्वेस्टर्स का प्लेजर बढ़ रहा है क्योंकि उनको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो हम यदि किसी का भी प्लेजर बढ़ाते हैं या उसका पेन कम करते हैं या दोनों भी करते हैं, तो हम उस इंसान के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, राइट। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वैल्यू, और ये डेफिनेशन एक्चुअली आपको कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में, ये फर्स्ट टाइम मैंने अपनी बुक में इंट्रोड्यूस की, बिकॉज मेरा काम ही है लोगों की लर्निंग को एकदम सिंपलर बनाना, इजियर बनाना, फास्टर बनाना, बेटर बनाना और चीपर भी बनाना, दैट इज माय वर्क। और एक्चुअली वैल्यू का यूजफुलनेस है, जो चीज मेरे लिए यूजफुल रहेगी तो तभी मैं उसको बाय करूंगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे कोई टैक्सी वाला आ जाए, मैं आई एम रिपीटिंग द एग्जांपल, बोलेगा कि सर मैं आपको एयरपोर्ट लेके जाता हूँ, आप मुझे 100 रुपीज में दे देना, तो मैं नहीं जाऊंगा ना, मुझे भी जाना ही नहीं है भाई, मुझे आप लोग को सेशन देना है, तो मेरे लिए वो चीज अभी यूजफुल नहीं है। लेकिन यदि मुझे फ्लाइट पकड़नी है, इफ आई टू मेक अ ट्रिप टू कोरिया और मुझे एयरपोर्ट जाना है, तो और मुझे यदि टैक्सी नहीं मिल रही है, तो कोई टैक्सी वाला मुझे डबल भी चार्ज करेगा तो मैं उसको डबल पे करूंगा। So that point of time, his services are valuable for me, right? हाँ, तो फ्रेंड्स एक्चुअली देखिए अभी ये फॉर्मूला फॉर वैल्यू क्रिएशन में बताने वाला हूँ आपको, और ये भी एक्चुअली दिस द फर्स्ट टाइम इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन माय बुक ओनली। दुनिया में आपको ये फॉर्मूला कोई भी नहीं बताएगा, इवन आईआईटीज भी, मैं भी नहीं बताने वाली ये फॉर्मूला। तो ये है फॉर्मूला फॉर वैल्यू क्रिएशन की, इसके 5 पैरामीटर्स हैं। हर वैल्यू के लिए एक स्किल सेट यूज होता है, एक्सपर्टीज लेवल रहता है, एटीट्यूड उसमें लगता है, एफर्ट लगता है, जैसे हार्ड वर्क कहते हैं और रिस्क टेकन लगता है। जैसे देखिए विराट कोहली का एग्जांपल ले लीजिए, सिंपल एग्जांपल जो सबको पता है, तो विराट कोहली के पास स्किल सेट है बैटिंग का, फील्डिंग भी वो अच्छी करते हैं, टीम वर्क भी उनका काफी अच्छा है, तो उनकी स्किल सेट है अभी बैटिंग की, फॉर एग्जाम्पल इज ए ग्रेट बैट्समैन, और उनकी एक्सपर्टीज लेवल भी काफी हाई है, उनका एटीट्यूड भी काफी अच्छा है, वो टीम वर्क के साथ काम करते हैं और मेहनत भी वो काफी करते हैं, अपनी फिटनेस पे भी काफी काम करते हैं। देयरफॉर वो इमेंस वैल्यू क्रिएट कर रहा है क्योंकि ये चारों, और वो रिस्क भी लेते हैं एक्चुअली, क्योंकि देखो यदि उनका मैच करोड़ों लोग देख रहे हैं और वो बंदा आउट हो गया जल्दी से, तो उनकी इंसल्ट होगी कि नहीं होगी इंसल्ट, जैसे फाइनल में वो अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए, तो उससे उनका थोड़ा ब्रांड वैल्यू कम हुई, तो वो रिस्क भी लेते हैं ना,
कि करोड़ों लोगों के सामने खेल रहे हैं, देयर इज अ ह्यूज रिस्क ऑफ गेटिंग इंसल्टेड। तो ये चारों पांचों फैक्टर उनके वैल्यू क्रिएशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इसीलिए वो मैसिव वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, और इसीलिए उनके पास मैसिव अमाउंट ऑफ वेल्थ आ रहा है। So do you guys agree with this formula? हाँ, the book name is The Ninth Habit. हाँ, तो इस बुक को आप लोग जरूर पढ़ो, ये बुक आपको बहुत ज्यादा पैसे कमा के देगी, पूरा रास्ता दिखा देगी। जैसे जिस तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको लग रहा हो ना, दीज आर वैल्यूएबल थिंग्स इन अ वेरी सिंपल एंड क्लियर मैनर। और मैं तो ये चैलेंज करके भी बोलता हूँ कि मेरे कॉन्सेप्ट को चैलेंज करो, कोई चैलेंज नहीं कर सकता इनको। राइट, ठीक है। सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो देखिए अभी तक आप लोग को बिजनेस लिटरेसी के जो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए, अभी तक आपको मतलब पार्शियल कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, और भी बहुत सारे ऐसे एनलाइटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको यदि आपने कर लिया तो एमबीए वाले से भी आपको ज्यादा नॉलेज हो जाएगा, और ये आपके कॉन्सेप्ट्स हमेशा आपके करियर में आएंगे। तो नाउ माय क्वेश्चन इज कि कितने लोग बिजनेस रिलेटेड बनना चाहते हैं? तो प्लीज राइट BWL इन द चैट बॉक्स, जितने भी लोग बिजनेस रिलेटेड बनना चाहते हैं, बिकॉज आई एम हियर टू हेल्प यू। राइट BWL इन द चैट बॉक्स। आपको लगता है कि बिजनेस लिटरेसी आपके कैरियर के लिए यूजफुल है, आपको कैंपस में इंटरव्यूज भी क्लियर कराएगी, आपको प्रमोशंस भी फास्टर दिलाएगी, आपकी सैलरी भी बढ़वा के देगी। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जो बिजनेस रिलेटेड बंदे हैं वो अपनी एंटायर कैरियर में एटलीस्ट 20% ज्यादा कमाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा 20 करोड़ कमाने वाला है एंटायर कैरियर में, तो 24 करोड़ कमाएगा। तो केवल बिजनेस रिलेटेड बनने से आपको 4 करोड़ ज्यादा मिल गया। तो इट इज वर्थ और नॉट? ओके ग्रेट। तो काफी लोग बोल रहे हैं दैट दे वांट टू बिकम बिजनेस रिलेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी एक्चुअली आप लोगों के पास दो ऑप्शन है बिजनेस रिलेटेड बनने के। एक तो जो 6th सेमेस्टर में क्या है कि बिजनेस रिलेटेड सी हैज बीन अप्रूव्ड एज एन ओपन इलेक्टिव बाय एनआईटी भोपाल। इसमें डायरेक्टर सर ने भी काफी हेल्प की उसको अप्रूव करने में और कराने में। तो ये आपको एक ओपन इलेक्टिव की तरह ऑफर किया जाएगा ये कोर्स। और देखिए, आपको इलेक्टिव लेना है तो कुछ ना आपको पढ़ाई तो करनी है इलेक्टिव की, राइट? तो क्यों ना बिजनेस लिटरेसी ही पढ़ लिया जाए, जो इससे आपको सारी लाइफ हेल्प मिलेगी, इंटरव्यू में भी हेल्प मिलेगी, आपको पूरे कैरियर में इससे हेल्प मिलेगी, है ना? तो अभी देखिए, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, तो जो भी बिजनेस लिटरेसी में इंटरेस्टेड हैं वो जस्ट मुझे उस आप लोग उस लिंक पे फिल अप कर दीजिए योर इन्फॉर्मेशन। सो वी विल गेट इन टच विथ यू एंड वी विल एंश्योर दैट यू बिकम बिजनेस रिलेटेड। और बिजनेस रिलेटेड में एक्चुअली ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती, केवल 30 आवर्स में ही आप बिजनेस रिलेटेड बन जाएंगे। इट्स वेरी इजी टू बिकम। इसमें आपको मैक्सिमम ROE मिलेगा, मतलब रिटर्न ऑन एफर्ट्स। तो ठीक है, जो लोग भी बिजनेस लिटरेसी में इंटरेस्टेड हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और ये देखिए, ये तो बात हो गई इलेक्टिव की। और जो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर्स के हैं, या जो भी एमटेक वाले हैं या थर्ड ईयर वाले जो भी हैं, आई मीन द अपकमिंग थर्ड ईयर, उनको हम सर्टिफिकेट कोर्स भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें सर्टिफिकेशन के थ्रू हम उनको बिजनेस रिलेटेड करेंगे, उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा फ्रॉम एनआईटी भोपाल दैट दिस पीपल आर बिजनेस लिटरेट, और वो चीज को वो कैंपस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो whoever is interested in becoming business literate, please fill this form irrespective of the year, जैसा आपका इंटरेस्ट चाहिए, and then we are here to help you only. So just fill this form. I will be back in a minute.
Neeraj sir, you're not audible. Okay. So ठीक है, friends, can we move forward? Yes, sir. Okay, fantastic. ठीक है, so we'll just wrap up this session in just 10-15 minutes. हाँ, तो देखिए अभी इंटरव्यू, कैंपस इंटरव्यू का प्रोसेस एक्चुअली क्या रहता है, तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर क्लियर फॉर यू. तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है कि जॉब एडवर्टाइजमेंट देती है, माइट भी आपके नोटिस बोर्ड पे वो लगाती होगी या दूसरे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन से आपसे कम्युनिकेट करती होगी. तो पहले तो कंपनी जॉब एडवर्टाइजमेंट करेगी, ठीक है. उसके बाद क्या होगा कि रिज्यूमे सबमिशन बाय स्टूडेंट्स को वो कंपनी अच्छी लग रही है तो वो उसमें रिज्यूमे भेजेंगे, राइट. दैट इज द स्टेप नंबर 2. देन कंपनी इसको शॉर्टलिस्ट करेगी. उनके कुछ क्राइटेरियाज रहेंगे कि उनको किस टाइप के बंदे चाहिए, किस टाइप के बंदों से वो वैल्यू क्रिएट करा सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, तो उसके हिसाब से वो उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे. नाउ उसके बाद रिटन टेस्ट होगा. तो देखिए रिटन टेस्ट क्या है कि टेक्निकल भी हो सकता है और एप्टीट्यूड भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं. मेरे टाइम पे तो मैक्सिमम एप्टीट्यूड वाले टेस्ट रहते थे कि रीजनिंग पे वो लोग पूछते थे, मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछते थे. पर अभी टेक्निकल रिटन टेस्ट ज्यादा हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर बंदा है तो वो सॉफ्टवेयर का टेस्ट देगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का टेस्ट देगा या कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे टेस्ट देगा टेक्निकल, ठीक है. तो ये रिटन टेस्ट का राउंड हो गया. इसके बाद टेक्निकल प्रोग्रामिंग राउंड होगा. दैट इज आई थिंक मोर एप्लीकेबल फॉर द सॉफ्टवेयर कंपनीज, कि वो आपको बोलेंगे कि ये छोटी सी प्रॉब्लम है, आप इसके लिए या छोटी सी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आप प्रोग्राम लिख के बताएं, तो वो आपसे ऑन द स्पॉट लिखवाएंगे, ठीक है. तो नेक्स्ट राउंड हो गया टेक्निकल प्रोग्रामिंग टेस्ट का. नाउ उसके बाद होगा टेक्निकल इंटरव्यू. तो टेक्निकल इंटरव्यू में क्या है कि वो टेक्निकल क्वेश्चन ही ज्यादा पूछेंगे. तो जो भी आपके की सब्जेक्ट्स हैं उस पर आप प्रिपेयर करें. और आई मीन प्रोग्रामिंग, यदि आप सॉफ्टवेयर वाले हैं तो आप प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट बने, तो यहाँ पे वो टेक्निकल इंटरव्यू फिर राउंड में आप क्लियर कर लेंगे उसको, ठीक है. इसके बाद होता है एचआर इंटरव्यू. तो एचआर इंटरव्यू में एक्चुअली वो ये देखते हैं कि ये बंदा हमारी कंपनी के वैल्यूज के सूटेबल है कि नहीं, इस बंदे का एटीट्यूड कैसा है, तो ये सब चीजें वो देखते हैं. इसमें मोटिवेशन कैसा है, या ये बंदा हमारी कंपनी के लिए कितना वैल्यू क्रिएट कर पाएगा, ये सारी चीजें वो देखेंगे, ठीक है. तो ये एचआर राउंड हो गया. फिर एचआर राउंड जिन्होंने क्लियर किया तो ग्रुप डिस्कशन राउंड में जाएंगे. और ये ग्रुप डिस्कशन राउंड एक्चुअली पहले भी हो सकता है, वो कंप्लीट टू कंप्लीट डिपेंड कर सकता है, इसकी सीक्वेंसिंग चेंज हो सकती है. यहाँ पे मैंने दिया नंबर 8 पे. हाँ, तो ग्रुप डिस्कशन में एक्चुअली वो ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, राइट. आपको शायद पता होगा कि पहले वो एक टॉपिक देंगे, फिर 2 मिनट का टाइम मिलेगा आपको प्रिपरेशन करने के लिए, आपको नोटपैड भी दिया जाता है, और उसके बाद फिर पब्लिक ग्रुप डिस्कशन करती है, और फिर उसमें से वो लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है. इसके बाद भी इन सब में भी बंदा सिलेक्ट हो गया तो फिर उसका बैकग्राउंड चेक होता है, और ये सब भी होने के बाद मेडिकल टेस्ट होता है. तो मेरे ख्याल से तो सभी बड़ी कंपनियां जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ये सब मेडिकल टेस्ट कराती हैं, माइट भी बजाज ऑटो भी कराती होगी. सो दीज आर द 10 राउंड्स ऑफ कैंपस इंटरव्यू प्रोसेसेस. तो इसमें कोई क्वेश्चन है?
बताइए, और एकदम क्लियर है ये प्रोसेस? इज इट क्लियर गाइस? यस सर। हेलो, ठीक है, क्लियर है ना? फाइन, विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है। हाँ, और अभी देखिए, ये मैं एक्चुअली आप द क्वालिटीज विच इंटरव्यूज लुक फॉर एंड वेयर दे आर इवेल्युएटेड। जैसे कि आपको पता होगा कि एक डायमंड का एवेल्यूएशन कैसे होता है, कट पे, क्लैरिटी पे, कैरेट पे और कलर पे। तो सिमिलरली इंटरव्यूअर्स भी कुछ कुछ क्वालिटी देखते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट? आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे कल भी हमने डिस्कस किया कि वो आपको एक सैलरी एश्योर कर रहे हैं कि आपको इतनी सैलरी हर मंथ देंगे। आपको वो ट्रेनिंग में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके लिए वर्क प्लेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको अपनी कंपनीज में अंदर घुसना भी अलाउड कर रहे हैं। इवन कंपनी के लिए यदि कोई गलत आदमी आ गया तो कंपनी के लिए रिस्क भी रहती है, उसमें कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा जा सकता है, राइट? और भी, या कोई गलत इंसान आ गया तो वो दूसरे नुकसान भी कर सकते हैं। तो वो आपको ये सब अलाउ कर रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट वो आपके साथ कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो भी आपको इवेल्युएट करेंगे, राइट? तो डू दे हैव द राइट टू इवेल्युएट यू और नॉट? टेल मी, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग इन यू, राइट? यस सर। जैसे, हाँ, राइट, फाइन। तो अभी देखिए, अभी किस किस राउंड में एक्चुअली जो अभी हमारे प्रोफेसर सर हैं उन्होंने भी काफी जो इस पे एड्रेस किया था, फिर बट अगेन आई एम रिपीटिंग इट, और ये स्लाइड फॉर्मेट में तो आपको एकदम क्लियरली विजिबल भी रहेगा। तो एनालिटिकल स्किल्स है वो किस राउंड में टेस्ट होती है? रिटन टेस्ट में होती है, टेक्निकल इंटरव्यू में होती है। रिटन टेस्ट में काफी बार तो एनालिटिकल स्किल्स पे ही टेस्ट हो जाता है, या टेक्निकल क्वेश्चन भी रहेगा तो भी उसमें वो एनालिटिकल स्किल आपकी देख लेंगे। फिर टेक्निकल इंटरव्यू में भी देख सकते हैं आपकी एनालिटिकल स्किल्स। लीडरशिप एबिलिटी आपकी ग्रुप डिस्कशन में हो जाए, देखा जाएगा, और एचआर राउंड में यहाँ पे इवैल्यूएशन किया जाता है आपका। कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपके सारे इंटरव्यूज में कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट होते ही है, फिर ग्रुप डिस्कशन में भी टेस्ट होगा, एचआर राउंड में भी होगा। नाउ प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये ग्रुप डिस्कशन एंड एचआर राउंड में आपका टेस्ट हो जाएगा। एटीट्यूड एंड कंट्रीब्यूटरी माइंडसेट, वेदर ये बंदे का कंट्रीब्यूटरी माइंडसेट है कि नहीं, वेदर ये बंदे का वैल्यू क्रिएशन ओरिएंटेड माइंडसेट है कि नहीं। हालांकि एचआर वाले भी इतना क्लियरली वो नहीं जानते कि वो वैल्यू क्रिएशन ओरिएंटेड माइंडसेट ढूंढ रहे हैं, उनको भी इतना क्लियर कट नहीं रहता है, बट अभी आप लोग को सब क्लियर कट होता जा रहा है। तो वो भी ये सब एटीट्यूड दोनों इंटरव्यू में देखे जाते हैं, और जीडी में भी इंटरव्यू एटीट्यूड बंदे का दिख जाता है कि ये बंदा प्रोफेशनल बंदा है कि नहीं, रिस्पेक्टफुली बात करता है कि नहीं, टफ सिचुएशंस में भी कूल रहता है कि नहीं, पेशेंस के साथ हैंडल करता है कि नहीं, और सबको एक विन विन सॉल्यूशन सबके लिए निकालता है कि नहीं। तो ये सब जीडी में और इंटरव्यूज में टेस्ट हो जाता है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि नॉलेज इज नॉट पावर, इट जस्ट पोटेंशियल पावर, एंड व्हेन द नॉलेज विल बिकम पावर इज व्हेन इट इज अप्लाइड। तो नॉलेज तो आप लोग कमा रहे हो, लेकिन उसका एप्लीकेशन भी होना चाहिए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, किसी रिक्वायरमेंट को मीट करने में। तो वो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज भी देखा जाता है। तो ये टेक इंटरव्यूज में टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अलाइनमेंट विद कंपनीज वैल्यूज, जैसे कि हमने कल भी रतन टाटा, साइप्रस मिस्त्री, नारायण मूर्ति और विशाल सिक्का के जो कन्फ्लिक्ट हुए थे उनके एग्जाम्पल दिए थे। तो वो कन्फ्लिक्ट एक्चुअली वो दो पीपल के बीच में नहीं थे, वो दो वैल्यूज के बीच में थे। क्योंकि एक बंदा जो है वो कंपनी रिसोर्सेज को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करना चाह रहा था, और नारायण मूर्ति वो बिलीव करते थे कि हम इकोनॉमिक फ्लाइट में ट्रेवल करेंगे, और वो ट्रेवल करते थे तो उनके सारे सीनियर मैनेजर्स, बड़े बड़े सीनियर मैनेजर्स जिनकी करोड़ों में सैलरी थी, वो भी इकोनॉमिक क्लास में ही जाते थे, ट्रेवल करते थे। तो वो कंपनी वैल्यू थी, इस तरीके से वो अपना एक्सपेंस कम करते थे। तो वो वैल्यूज में टकराव हुआ वहां पे, और इसके कारण वो कन्फ्लिक्ट हुए सारे। तो एनीवेज, तो पर्सन कंपनी वैल्यू से अलाइनमेंट में है कि नहीं, वो एचआर राउंड में देखा जाता है, राइट? सो एनी क्वेश्चन सो फार, or should we move to the next slide? Yes, any question, or should we move to the next slide? Okay, all clear. Okay, great, fine. तो देखो, अभी मैं आपको एक और एनलाइटिंग पिक्चर दिखाता हूँ। ये जो जॉब जो कैंपस सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इट्स लाइक ए फनल।
क्योंकि देखो कंपनी ने जॉब एडवर्टाइजमेंट किया, फॉर एग्जांपल उनको 100 लोगों ने अप्लाई किया, 100 लोगों ने रिज्यूमे दिए, उसमें से उन्होंने 75 को शॉर्टलिस्ट किया, फिर रिटन टेस्ट में भी लोग आए, फिर रिटन टेस्ट में भी कुछ निकल गए, तो इट्स अ फनल ना, तो एंड में जाते जाते बहुत कम लोग बचते हैं, सो इट्स अ फनल एक्चुअली। और आप लोगों को मतलब इससे क्या है, ये पिक्चर मैंने आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ इससे आप लोग को और भी क्रिस्टल Sir, your mic is mute. आई डोंट नो व्हाई दैट हैपेंड। तो कहाँ तक सुना आपने, कहाँ तक का सुना जब माइक म्यूट? So सर आप use बता mute रहे all थे time, sir. कंपनी आप ये पिक्चर दिखा रहे हैं क्योंकि हाँ राइट, हाँ तो एक्चुअली मैं एक पिक्चर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे आपको एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर मिल रही है कैंपस इंटरव्यू प्रोसेस की, कि जो इट्स ए फनल, हर स्टेज पे नैरो डाउन होता जाता है, और जो फाइनली लोग कम होते जाते हैं, फिर जो फाइनली जो सक्सेसफुल होते हैं वो काफी कम होते हैं एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ पीपल विच हैज एंटर्ड। लेकिन देखिए किसी कंपनी में आपका नहीं होता है, कहीं पे आप फनल में बीच में से निकल गए या रिटन टेस्ट में ही आप निकल गए, मतलब वहां से एलिमिनेट हो गए, तो चिंता की कोई बात नहीं है, दूसरी कंपनी आएगी। आपने जो फेलियर इज अ ग्रेट टीचर, तो भी उसमें चिंता की कोई बात नहीं है, जस्ट आप एक्सपीरियंस ले लीजिए, एंड फेलियर इज अ ग्रेट टीचर एंड फेलियर इज अ पिलर टू सक्सेस। तो नेक्स्ट कंपनी में आप सक्सेस हो जाएंगे। जैसे मेरा भी क्या है कि थर्ड कंपनी में सिलेक्ट हुआ था, मैं फर्स्ट 2 में तो मैं फेल हो गया था, बट आई हैव लर्न फ्रॉम दोज इंटरव्यूज, तो उनकी जो लर्निंग थी उसके कारण ही मेरा थर्ड में सिलेक्ट हुआ एक्चुअली, राइट। तो आई होप इससे आपको काफी क्लियर पिक्चर मिल रही है इस फनल से। और देखिए एक्चुअली ऑब्जेक्टिव पता है क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि इट शुड नॉट लाइक ए फनल, इट शुड बी लाइक ए पाइप, कि जितने लोगों ने अप्लाई किया सारे के सारे बंदे सेलेक्ट हो गए। आई नो इट्स आइडियल थिंग, जैसे कि फिजिक्स में भी रहता है ना कि आइडियल वाइट बॉडी आइडियल ब्लैक बॉडी होता नहीं है, तो आई नो इट्स वेरी आइडियल सिचुएशन। हमारा ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि वो फनल की जगह एक पाइप टाइप स्ट्रक्चर आना चाहिए कि जितने लोगों ने अप्लाई किया सारे के सारे हमारे बंदे सेलेक्ट हो गए। तो अरुणा मैम भी इससे काफी खुश होंगी यदि ऐसा हो गया तो। ठीक है गाइस, सो एनी क्वेश्चन सो फार? तो अभी तक आपको ये सेशन कैसा लगा? ओके फाइन, ओके थैंक यू, राइट। हाँ तो देखिए अभी एक्चुअली लेकिन जो नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एवरी सिंगल राउंड। जैसे कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या बताने वाला हूँ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर रिज्यूमे सबमिशन, तो इसके मैंने कुछ पॉइंट बताया आपको। देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर रिटन टेस्ट, ठीक है इसके स्टेप्स हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रोग्रामिंग, तो मैं क्या करने वाला हूँ आपको इसकी पीपीटी में सेंड करने वाला हूँ, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो अभी एक्चुअली क्या है कि आई नो आपका एनर्जी लेवल भी कम हो गया होगा क्योंकि अभी 2 घंटे होने वाले हैं, तो द बेस्ट थिंग इज आई विल सेंड यू द पीपीटी फॉर दिस, और जो भी आपको क्वेश्चन है वो आप मुझे कल पूछिए। तो मतलब इसमें इतने एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, और एनआईटी के स्टूडेंट तो वैसे भी ब्रिलियंट होते हैं, ठीक है। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर एवरी सिंगल राउंड, इसके लिए मैंने एक अलग से एक स्लाइड बनाई है, और इस स्लाइड का मैं बंच आपको भेज दूंगा, राइट। और दूसरा चीज मैं आपको एक और चीज भेजूंगा कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, मतलब लोग सिलेक्ट क्यों नहीं होते हैं, क्या क्या वो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और उनको कैसे अवॉइड किया जाए, उस पर भी स्लाइड है। तो वो भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत ईजी है, उसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो वो उसकी स्लाइड भी आपको मिल जाएगी। तो विद दिस हमारा एजेंडा आज का पूरा हुआ कि जो हमारे कंपनी का जो कैंपस का सिलेक्शन कैसे रहता है वो हमने डिस्कस किया, बिजनेस वाले ट्रेस के हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, आप लोग काफी एनलाइटन भी हुए। फिर हमने डिस्कस अभी हम पीपीटी भेजेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एवरी सिंगल राउंड, उसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी, तो वो भी एजेंडा कवर हो जाएगा। एंड व्हाई द पीपल दे आर एलिमिनेटेड एंड व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स, और उनको कैसे अवॉइड किया जाए, प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी उन स्लाइड्स में है।
तो वो भी आपको मिल जाएगा. So with this, our agenda of day 2 will also be over. ठीक है, तो कोई क्वेश्चंस है आपके लिए, और we can close this session for day 2. Okay, so no questions. Okay, so now we can close the session for day 2. Now over to the organizers. Dr. Gupta, Okay. thank you for addressing our questions with such clarity and depth. Before we conclude, I am pleased to invite Professor Manish Vishwakarma from the Department of Mechanical Engineering to deliver the vote of thanks. Professor Manish Vishwakarma, over to you, sir. Professor Manish, are you there? Yeah, sir. Am I audible now? Yes, sir, Yes, you're audible. yes, you're audible. Yes. Yeah. Good afternoon, everyone. Hereby on behalf of MANIT Bhopal administration, students, and faculty, I would like to extend a heartfelt vote of thanks to our esteemed expert, Dr. Neeraj Gupta, for delivering such an insightful and engaging lecture on career counseling. Your guidance and expertise have truly inspired our students, providing them a valuable information and perspective as they navigate their career path. Your dedication to shaping the future of next generation is truly commendable, and we are grateful for the time and the efforts you have put into this session. We believe the knowledge shared today will have a lasting impact on the students as they make important decisions for their future. Once again, thank you for your time and for enriching us with your wisdom. We look forward for more such opportunities to learn from you in the future. Thank you very much, Dr. Neeraj. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, Manish, sir. Thank you, Manish, sir. And this brings us to the conclusion of today's session. Thank you all for your active participation. And we will now break for lunch. And post-lunch, we encourage all the students to have an interactive session with the training and placement faculty coordinators from your department. Also, we look forward to seeing you again tomorrow at the same time for our next session on resume writing plus AI optimization. Thank you all. Okay, see you guys tomorrow. Bye-bye.